Hello, how are you all? I hope you are doing well. Today we are going to discuss our chapter plants in the surrounding. Here are some warm-up questions. Look at this picture and label the parts of our plant so you can do it by yourself. Here is, let's know about parts of a plant, a structure of a seed, germination, care of plants. Plants are one of the most important living things as they can prepare their own food. All other living beings depend on plants for food directly or indirectly. बच्चे जो प्लांट्स होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट लिविंग थिंग है क्योंकि वो अपना खाना खुद प्रिपेयर करते हैं और बाकी जो भी आपके लिविंग बींग्स हैं वो एनिमल्स हो ह्यूमन बींग्स हो या जो भी है वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आपके प्लांट्स पे डिपेंड करते हैं. Here is parts of a plant. Look at this picture. Flower make fruits and seeds. Leaves get sunlight and make sugar. The plant use sugar as food. Fruit hold seeds. Stems carry water, nutrients and sugar throughout the plant. They also hold the leaves. And root take in water and nutrients. They also hold the plant in. So बच्चे these are the different parts of a plant और different part different work करते हैं. And this is the plant of a tomato. Okay, and these are the parts of a tomato plant. Here is, there are several parts of the plant and each part has its own work to do. All these parts work together to keep the plant alive. There are two main parts of the plant, the root and the shoot. बच्चे जो आपके plants हैं उनके बहुत सारे parts होते हैं लेकिन जो main part जो होते हैं वो root and shoot. Okay, now we will read about the root. The part of the plant that grows under the soil is called the root. Different plants have different types of root. बच्चे रूट वो पार्ट होता है प्लांट का जो आपके सॉइल के अंदर जो है ग्रो करता है और हर एक प्लांट के डिफरेंट टाइप्स ऑफ रूट्स होते हैं. There are two types of root, taproot and fibrous root. So बच्चे रूट कितने टाइप्स की होती है? दो टाइप की होती है. The first one is taproot and the fibrous root. First we will read about the taproot. Taproot is a thick main root below the stem and goes deep into the soil and several thinner side roots grow from the main root. Plants like beans, carrot, hibiscus, beetroot, mustard and mango have taproots. तो बच्चे जो टैप रूट होती है वो जब आपकी सॉइल के अंदर ग्रो करती है उसमें से कुछ मेन पार्ट से भी कुछ और थिनर साइड्स जो है ग्रो करना स्टार्ट कर देती है और ऐसी रूट्स को हम क्या बोलते हैं? टैप रूट बोलते हैं. और किस में मिलती है? कैरेट हो गया, बीट रूट, मस्टर्ड और मैंगो, इन सब जो प्लांट या ट्रीज की जो रूट होती है बच्चा वो टैप रूट होती है. नाउ कम टू द सेकंड वन, दैट इज फाइब्रस रूट्स. Fibrous roots have a number of tiny roots attached to the end of the stem. It looks like a bunch of roots. Plants like grass, wheat, rice, onion and banana have fibrous roots. तो बच्चे जो आपकी फाइब्रस रूट है वो क्या लगती है? जैसे वो बंच होता है रूट्स का, ठीक है. और वो जो बंच होता है रूट्स का वो कैसे प्लांट्स में मिलता है? जैसे ग्रास, व्हीट, राइस, इन सब की रूट कैसी होती है बच्चा? फाइब्रस रूट होती है. Here is functions of root. Root hold the plant firmly to the soil and support the stem above. रूट क्या करती है? आपके प्लांट को होल्ड करती है और सपोर्ट करती है कि उसके स्टेम जो है वो सीधे रहे. ओके, फंक्शंस ऑफ रूट्स. Roots absorb water and nutrients from the soil that the plant needs to grow and stay healthy. तो बच्चे जो आपके रूट्स हैं उनको वो क्या करती हैं? आपके वाटर को एब्जॉर्ब करती हैं, मिनरल्स को एब्जॉर्ब करती हैं सॉइल से और प्लांट को हेल्प करती हैं ग्रो करने में और हेल्दी रहने में. Roots even store food for the plants such as carrot, radish and beetroot to use in the future. जो आपकी रूट है वो स्टोर भी करती है फूड को कि जैसे आपकी कैरेट है, रेडिश है, बीटरूट है, वो क्या है बच्चे? प्लांट का फूड है जो रूट में स्टोर होता है. ठीक है. नाउ कम टू द शूट. The part of the plant that grows above the soil is called the shoot. Stem, branches, leaves, flowers and fruits are all part of the shoot. तो बच्चे जो आपका शूट होता है वो क्या है? जो आपकी सॉइल से अबोव ग्रो करता है. ठीक है. उसके पार्ट्स क्या है? स्टेम, ब्रांचेस, लीव्स एंड फ्लावर्स एंड आल्सो फ्रूट्स. ओके, तो ये सब क्या है बच्चा? ये सब आपके शूट सिस्टम के पार्ट्स हैं. नाउ द स्टेम. द मेन पार्ट ऑफ द शूट इज द स्टेम. Branches, leaves, flowers and fruits grow on a stem. Some plants have soft stem, banana tree, and some have hard stem, mango tree and banyan tree. Hard stem is called trunk.
सो बच्चे जो स्टेम है वो आपके सूट का जो है मेन पार्ट होता है, क्योंकि ब्रांचेस, लीव्स, फ्लावर्स और फ्रूट सब किस पे ग्रो करते हैं बच्चा? स्टेम पे ग्रो करते हैं, ठीक है। कुछ प्लांट्स का जो स्टेम है वो सॉफ्ट होता है जैसे बनाना ट्री का, और कुछ प्लांट्स का स्टेम बहुत हार्ड होता है जैसे मैंगो ट्री। और जिन प्लांट्स का स्टेम जो है हार्ड होता है, उस हार्ड स्टेम को बच्चा हम बोलते हैं ट्रंक। ओके, हियर इज फंक्शंस ऑफ स्टेम्स। Stem makes the plant stand upright. It carries water and nutrients from the roots up to the rest of the plant. It also carries the food made by the leaves to all parts of the plant. In sugarcane, the food made by the plant is stored in the stem. Onion, ginger and potato are underground stem which also store food. तो बच्चे जो स्टेम होती है वो क्या करती है? आपके प्लांट का जो फूड होता है, वाटर होता है, न्यूट्रिएंट्स होते हैं, उन सबको क्या करते हैं बच्चा? वो पूरे प्लांट में जो है ट्रांसफर करती है। और जो आपकी लीव्स खाना बनाती है उसको भी पूरे प्लांट में ट्रांसफर करते हैं। और आपकी कुछ एक स्टेम ऐसी होती है जो फूड को स्टोर करती है, जैसे शुगर केन। शुगर केन की स्टेम, शुगर केन क्या है बच्चा? एक स्टेम है जो फूड स्टोर करती है। आपका ओनियन है, जिंजर है और पोटैटो है। बट ओनियन, जिंजर एंड पोटैटो क्या है बच्चा? अंडरग्राउंड स्टेम है। अंडरग्राउंड का मीनिंग क्या है? जो सॉइल के अंदर ग्रो करते हैं। ओके, नाउ द लीव्स। The leaves are responsible for making food for the whole plant to eat. They are different shapes and sizes. Most of them are green in color due to the presence of green pigment called chlorophyll. तो बच्चे जो आपकी लीव्स होती हैं वो आपके प्लांट के लिए क्या करती हैं? खाना बनाती हैं। उनके साइज और शेप क्या होती है? डिफरेंट होते हैं। मोस्ट ऑफ द लीव्स किस कलर की होती हैं बच्चा? ग्रीन कलर की होती है। उनका कलर ग्रीन क्यों होता है? क्योंकि उनमें ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है जिसको हम क्या बोलते हैं बच्चा? क्लोरोफिल। नाउ स्ट्रक्चर ऑफ लीफ। The flat part of a leaf is called lamina or leaf blade. It consists of main vein that passes through the middle of the leaf called midrib, and several small veins that form a network and carry water and minerals to all parts of the leaf. The petiole attaches the leaf to stem or branch. The lower side of the leaf has many tiny openings called stomata. Air enters the leaf through the stomata. The leaf takes in carbon dioxide through the stomata. तो बच्चे जो आपकी लीफ होती है, जो उसका प्लेन पार्ट होता है उसको हम लीफ ब्लेड बोलते हैं। और लीफ ब्लेड में जो आपको एक दिखाई देता है वो मिड रिब होता है, और बहुत सारी जो स्ट्रक्चर्स दिखाई देती है वो वेन्स होती है बच्चा। वो क्या करते हैं? मिनरल्स, वाटर सबको कैरी करते हैं प्लांट्स में, ठीक है। और जो पेटियोल, दैट मींस जहां से आप लीफ को क्या करते हैं बच्चा? डी अटैच करते हैं प्लांट से। वो पेटियोल होता है वो किसको अटैच करता है? लीफ को किससे अटैच करता है बच्चे? स्टेम से अटैच करता है, ठीक है। और जो आपकी लीफ होती है उसकी लोअर साइड में क्या प्रेजेंट होता है बच्चा? स्टोमेटा प्रेजेंट होता है। और स्टोमेटा के थ्रू आपकी जो लीव्स है वो क्या लेती है? कार्बन डाइऑक्साइड को टेक इन करती है। Here is functions of leaves. Leaves are called the food factories of a plant. They use sunlight, water from the stem and carbon dioxide from the air to make food for the plant by the process called photosynthesis. The food made by leaves is sent to all parts of the plant through the stem. तो बच्चे मेन फंक्शन आपकी लीव्स का होता है, वो आपके प्लांट्स के लिए क्या प्रिपेयर करती हैं? फूड प्रिपेयर करती हैं। हम अपनी लीव्स को फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट भी बोलते हैं। और जिस प्रोसेस से बच्चा वो खाना प्रिपेयर करती है उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं बच्चे? फोटोसिंथेसिस। और जो खाना बच्चे लीव्स प्रिपेयर करती हैं वो आपके स्टेम की हेल्प से आपके पूरे प्लांट में जाता है। ओके, नाउ while making food, the leaves give out oxygen that is important for human being and animals to breathe. बच्चे जब खाना बनाती है लीव्स तो वो टेक इन करती हैं कार्बन डाइऑक्साइड, बट टेक आउट करते हैं ऑक्सीजन। और वो जो ऑक्सीजन हमें देती है वो हमारे लिए बहुत हेल्पफुल होता है, क्योंकि ह्यूमन बीइंग और एनिमल्स ब्रीथ करते हैं किसके लिए? ऑक्सीजन के लिए। इन सम प्लांट्स फूड इज आल्सो स्टोर्ड इन लीव्स सच एज कैबेज एंड स्पिनच। लेकिन कुछ प्लांट्स होते हैं बच्चे, जैसे मैंने अभी आपको पढ़ाया है कि हमारे प्लांट्स जो है वो अपना खाना किस में स्टोर करते हैं? रूट्स में, स्टेम्स में भी करते हैं, वैसे ही लीव्स में भी करते हैं, जैसे स्पिनच और कैबेज। हियर इज फ्लावर्स। Flowers are the most colorful and the beautiful part of the plant. They are of different colors, shapes and sizes. They have very pleasant smell to attract insects. They develop, form a small bud and change into fruits later. Flowers are important to a plant as they help it to produce more of its kind.
तो बच्चे जो फ्लावर होता है वो सबसे कलरफुल और ब्यूटीफुल पार्ट होता है आपके प्लांट्स का। वो डिफरेंट कलर, शेप्स और साइज के होते हैं। उनमें एक बहुत प्यारी स्मेल होती है जो किसको अट्रैक्ट करती है बच्चा? इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करती है। और जो आपका फ्लावर होता है वो बाद में किस में चेंज हो जाता है बच्चा? फ्रूट में चेंज हो जाता है। एंड जो फ्लावर्स हैं वो प्लांट्स को रिप्रोड्यूस करने में हेल्प करते हैं। दैट मीन्स उनके जैसे ही और बहुत सारे प्लांट्स को बनाने में हेल्प करते हैं। हियर इज फ्रूट्स। A flower turns into a fruit. Fruit is fleshy, eatable part of the plant containing seeds. Different fruits contain different types and number of seeds. An apple contains a few small seeds, while a mango contains a single large seed. Papaya and pomegranate contains many small seeds. The function of a fruit is to enclose and protect the seeds. Most of the fruits are eaten by us, such as orange, mango, एप्पल, बनाना, स्ट्रॉबेरी, चेरी एक्सेट्रा। सो बच्चे जो फ्रूट्स होते हैं वो ईटेबल पार्ट होता है आपके प्लांट का, और उसमें बहुत सारे जो है सीड्स प्रेजेंट होते हैं। किसी में बहुत ज्यादा होते हैं, किसी में बहुत कम होते हैं और किसी में सिर्फ एक सिंगल होता है, ठीक है। लेकिन जो हमारे फ्रूट्स का जो मेन वर्क है वो क्या होता है बच्चा? कि वो आपके सीड्स को जो है प्रोटेक्ट करे, ठीक है। नाउ वी हैव सीड्स. Seeds are the part of the plant that give rise to a new plant. A seed is made up of different parts. Cotyledon, seed coat, embryo, they are mostly enclosed within the fruits. So क्या है बच्चा? ये सब आपके seeds के part है, okay? Do you know strawberry is the only fruit that bears its seed on the outside. The average strawberry has 200 seeds. जो बच्चे आपके स्ट्रॉबेरी होती है उसके सीड्स कहाँ होते हैं? आउटसाइड होते हैं, और एक स्ट्रॉबेरी में एवरेज 200 सीड्स होते हैं। Now we have check and mate. As you already read about these things, so you can do it by yourself. Now we have a structure of a seed. A seed contains seed leaves or cotyledons which have a baby plant inside it called embryo. The cotyledon store food for the growing embryo. The outer covering of the seed is called the seed coat, which is generally hard and protect the seed from damage. Plants are classified according to their seeds. So बच्चे जो आपका सीड होता है उसमें क्या होते हैं? सीड लीव्स, जिसको हम क्या बोलते हैं? कोटिलेडोन्स। और बेबी प्लांट जिसके अंदर होता है उसको हम एम्ब्रियो बोलते हैं। और जो आपका सीड कोट होता है वो हार्ड होता है और आपकी सीड को डैमेज होने से प्रोटेक्ट करता है। और जो हमारे प्लांट्स हैं हम उनको क्लासिफाई करते हैं कि उनका सीड कैसा है। ओके, नाउ लेट्स रीड अबाउट इट। Seeds with two seeds leaves or cotyledons are called dicotyledons. Gram, kidney beans, pea, mango are some example of dicot seeds. Seeds with one seed leaf are called monocotyledons. Wheat, maize, rice, sugarcane are some example of monocot seeds. So बच्चे क्या होता है? जिन सीड्स में सिर्फ एक लीव होती है वो मोनोकॉट सीड होते हैं। जिन सीड्स में दो लीव्स होती हैं बच्चा वो डाइकोट सीड्स होते हैं। ओके, डू यू नो बैम्बू इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग वुडी प्लांट इन द वर्ल्ड. इट कैन ग्रो 35 इंचेस इन अ सिंगल डे. तो बच्चे जो आपका बैम्बू ट्री होता है वो बहुत ज्यादा फास्टेस्ट ग्रोइंग वुडी प्लांट है और वो एक दिन में 35 इंचेस ग्रो करता है। Look here, here is a picture. In this picture, the germination of seed is shown. First, seed, then radicle, then hypocotyle, then root hairs, and then a plant come outside. So this is the process of germination. Here is the growth of a seed into a young plant or a seedling is called germination. When the seed gets enough light, air, water and soil and warm sunlight, a tiny plant grows out and germinates of it. Not all seeds germinate into new plants. Some are eaten up by the birds and insects. Some get destroyed by rain or wind, while some do not get the right conditions for germination. So बच्चा germination क्या होता है? जब आपका एक सीड जो है वो एक यंग प्लांट में चेंज होता है, वो प्रोसीजर क्या होता है बच्चा? germination होता है। और जर्मिनेशन किस में होता है? जब उसके अकॉर्डिंगली आपकी कंडीशंस हो, जैसे इनफ लाइट हो, एयर हो, वाटर हो, सॉइल हो और टेम्परेचर हो। लेकिन बच्चा जब हम सीड्स को क्या करते हैं? शोन करते हैं। जरूरी नहीं बच्चा हर एक सीड जो है जर्मिनेट करे, वो कंडीशंस पे डिपेंड करता है। सपोज इट कि कुछ जो आपके कुछ सीड्स होते हैं उनको क्या हो जाता है? आपके बर्ड्स जो है खा लेती हैं, इंसेक्ट्स खा लेते हैं, या फिर वो हवा और
बारिश की वजह से क्या हो जाते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। कुछ जो आपके सीड्स होते हैं उनको राइट कंडीशन नहीं मिल पाती है बच्चा जर्मिनेशन के लिए। सो क्या होता है बच्चे, जब हम शोन करते हैं सीड्स को, इसलिए हम कुछ एक्स्ट्रा शो करते हैं ताकि हमारे जो प्लांट्स हैं वो, जो हम क्रॉप जो हमें चाहिए होती है वो अच्छे से जो है ग्रो कर पाए। ओके स्टूडेंट्स, बच्चे क्या होता है, जब जो हमारे सीड्स हैं जब वो क्या करते हैं, ग्रो करते हैं, उनसे एक प्लांट बनता है, उस प्रोसीजर को हम जर्मिनेशन बोलते हैं। ठीक है, जो हमारे सीड्स हैं जब उन्हें जर्मिनेशन दैट मींस जर्मिनेट कराया जाता है तो उनके लिए एक फेवरेबल कंडीशंस होती है, जैसे इनफ लाइट हो, एयर हो, वाटर हो, सॉइल हो और टेम्परेचर हो। अब बच्चा होता क्या है कि जब हम एक क्रॉप हमें चाहिए होती है तो हम बहुत सारे सीड्स को सो करते हैं। जब हम सीड्स को सो करते हैं तो क्या होता है कि हर एक सीड जर्मिनेट नहीं करता है। उसका रीजन क्या है कि कुछ एक सीड्स की फेवरेबल कंडीशन नहीं हो पाती है अकॉर्डिंग टू द जर्मिनेशन, और कुछ एक सीड डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, विद बर्ड्स डिस्ट्रॉय कर देती हैं, इंसेक्ट्स डिस्ट्रॉय कर देते हैं, या फिर नेचुरल कंडीशंस। ओके, डू यू नो an average size tree can provide enough wood to make 1,70,100 pencils. Bananas contain a natural chemical which can make people feel happy. The first potatoes were cultivated in Peru about 7,000 years ago. Here is cares of plant. We should take care of plants because plants help us in many ways, like plant provide us food and the clean air. Plant give us wood, medicines, cotton and many other things. Plant maintain carbon dioxide oxygen balance in the air. Plant help in bringing rain and preventing floods. So स्टूडेंट, क्या है, हमें प्लांट्स की केयर करनी चाहिए। क्यों करनी चाहिए कि प्लांट्स हमारे बहुत सारे तरीकों से हेल्प करते हैं, जैसे हमें खाना देते हैं, अच्छी एयर देते हैं, वुड, मेडिसिन, कॉटन और बहुत सारी चीजें हैं जो हमें किससे मिलती हैं बच्चा, प्लांट्स से मिलती हैं। Thus, we should protect the plants in order to keep on enjoying all the benefits. Plants need water to grow, so water the plants regularly, otherwise it will die. Plants should be placed in such a way that they receive enough sunlight. Plant leaves should be cleaned regularly so that plants breathe easily. Pests and weeds should be removed regularly. तो बच्चे, हमारे प्लांट्स को हमें केयर करना चाहिए, तो हमें क्या क्या करना चाहिए, डेली हमें प्लांट्स को पानी देना चाहिए, उनकी लीव्स को जो है रेगुलरली क्लीन करते रहना चाहिए ताकि वो अच्छे से ब्रीथ कर पाए। पेस्ट और वीड्स को रेगुलरली रिमूव करते रहना चाहिए। ये कुछ चीजें हैं, अगर हम फॉलो करते हैं तो हमारे प्लांट्स जो है अच्छे से ग्रो करते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, वी हैव check and mate. As we already discussed about these things, so you can do it by yourself. What we learned in this chapter, now we will discuss it in a nutshell. Here is, a plant has two main parts, the root and the shoot. The root takes in water and minerals from the soil, and the shoot consists of the stem, leaves, buds, flowers and fruits. The root fixes the plant firmly to the soil. The stem holds the plant upright and straight. The leaves prepare food for the plant. Flowers change into fruits. Fruits contain seeds. The seed has a tiny plant in it, germinate into a new plant when it gets the right amount of air, water, soil, warmth, nutrients and temperature. We should take proper care of plant. Okay students, now we have some keywords. Shoot, the part of the plant that grows above the soil. Trunk, hard stem, chlorophyll, a green pigment present in plant. Stomata, mini tiny openings on the lower side of a leaf. Dicotyledon, seeds with two leaves. Monocotyledons, seeds with one seed leaf. Okay students, thank you. We will meet again.